Welcome back, guys. If you do not know who I am, my name is Kshitij and I teach you guys about dating advice, personal development and how to build that Iron Man fucking lifestyle. Today we're going to talk about the fucking downward spirals जो बार बार आते हैं यार. ऐसा होता है ना कई बारी तुम अप्रोचेस कर रहे हो तो दो वेज में आता है डाउनवर्ड स्पाइरल हमारे माइक्रो एंड मैक्रो. एक तो यार अप्रोच कर रहे हैं और डाउनवर्ड स्पाइरल जाए जा रहा है और एंड तक स्टेट की एकदम लग गई है. बिल्कुल मन नहीं कर रहा कुछ भी करने का. यूर लाइक गॉन डाउनवर्ड स्पाइरल एंड यूर जस्ट डन. और अगले दिन भी आके तुम्हारा मन नहीं करता. मैक्रो लेवल पे क्या होता है, यूर डूइंग एवरीथिंग राइट, ठीक है, सब कुछ सही जा रहा है बट तुम्हारा बस बुरा टाइम चला हुआ है ना, तो जितने भी नंबर ले रहे हो वो फ्लिक जा रहे हैं. Whoever you're texting, they don't want to meet you. Whoever you're calling is not answering your call. The girls who would be after your life to meet you up, अब वो भी reply नहीं कर रही हैं यार. Usually this happens after a breakup as well. Yeah, usually this happens जब तुमने बहुत भाव खाए होते हैं. Because that time you're in abundance. You've got so many girls to text. You've got so many girls hitting you up. तो तुम ज्यादा भाव नहीं देते हो. And you're like, चेप है भाई के पीछे चेप है. अपन तो डॉन है, अपन तो रोर करेंगे, टाइगर है. और फिर एक टाइम आता है when the girls are not replying to you, कोई कुछ भी नहीं कर रहा. And then that is the time when you think of texting that girl who you never thought of texting, right? जो तुम्हारी क्लास में who isn't that cute, and even the girl जिसका तुमने नंबर ऐसी just for practice ले लिया था to improve your skill set, and even the girl who was after your life and texting you on fucking Instagram to meet up with you, but then none of these girls are replying once you hit them up. What do? You're in a fucking downward spiral. State crash हो गया तुम्हारा. What do you do in such a situation? Before that, if you've not subscribed yet, guys, make sure you hit the subscribe button, you spank it, smash it, demolish it, and let's start with the video. So, firstly, downward spirals happen to everyone यार. On a micro level, I could be going out, और बाहर जाके मैं approaches वगैरह कर रहा हूँ, सब कुछ सही जा रहा है, ठीक है, सब कुछ amazing जा रहा है, and then out of the blue I get this fucking crazy rejection और मेरी state down हो जाती है, और I see my ex in public और फिर मेरी state फिर से down हो जाती है, या फिर वो बंदा जिससे मैं लड़ा हुआ हूँ, फिर मेरी state वहाँ पे down हो जाती है एकदम से. अब हम क्या करें? या फिर एक set बहुत सही जा रहा है and something or the other has just fucking happened, तुम्हारी वाट लग गई वहाँ पे, वो set खराब हो गया and your state is gone fucking crashing. I've spoken about this thing in the previous video where I talk about being very fluid and treating things like they're always part of the plan. So इस sense में when you've hit that downward spiral, right, and then उसके बाद तुम जाए जा रहे हो, how do you get out of it? Firstly, know that this thing happens to everyone. This is universal. सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है. Everybody goes through this. Secondly, don't make a big deal out of it. What you can do here is just accept it. Like that's the only solution that you can have. Eckhart Tolle says that anytime something goes wrong in life, now you have three solutions to it. Number one, you try to change the situation. जैसे let's say you're stuck in traffic. So अब traffic है और तुम late हो रहे हो. What can you do in such a crisis situation? You can change the situation. It could be like कि तुम बाहर निकल के ट्रैफिक हटा दो, जो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है. Secondly, you leave the situation. तुम अपनी गाड़ी छोड़ो और कैब से चले जाओ या पैदल चले जाओ या कुछ करो, वो भी इसमें feasible नहीं है. And the third thing is to accept your fate and just accept it and come to terms with it and come to peace with it कि यार अब तो this is the course of life. अब ये हो रहा है तो ये हो ही रहा है. तो फिर जब भी वो हरिकेन आ रहा है तुम उसमें फंस नहीं रहे, तुम मस्त उसके ऊपर चढ़े हुए हो और उसके साथ जा रहे हो जहां तक तुम्हें लेके जा रहा है. You're not being a leaf in the wind और करके तुम्हारा खुद का हरिकेन बना दिया है. The solution here is to stop resisting that. Whatever is happening to you, just accept it. It's okay. You can't do anything about it. It's a process. It's going to be that. Just focus on the process कि तुम अपने 20 minutes accept कर रहे हो नहीं कर रहे हो. तुम्हारा confidence level कैसा है? तुम्हारी vocal tonality कैसी है? Are you talking in a passionate manner? Are you very certain with what you're saying? Are you being commanding? Are you leading? Are you being self-amusing? Are you saying things because you find them funny, or you're saying it because you wanna impress the fucking girl? Are you offering value or are you taking value? Are you leeching from her? Are you being a burden to her? तो उसको खुश कर रहे हो? Are you thinking win-win or not? That's the only thing you can do. उसमें फंसने का कोई point नहीं है. Either you can quit pick up, either you can go back home, not do the approach, or just accept it and be like यार अब तो ये हो गया है, अब ये downward spiral चल रहा है, तो इसको accept कर लेते हैं. So once you accept that you're in a downward spiral and तुम्हारी state down जाए जा रही है, उसको तुम worse नहीं कर रहे हो. जैसे मतलब आग लगी हुई है, तुम आग में और घी नहीं डाल रहे हो उसके ऊपर obsess करके कि shit यार मैं तो downward spiral में जा रहा हूँ, मेरी state अच्छी नहीं है. अब ये सोच के ना ऐसा होएगा कि मेरी state अच्छी नहीं है तो at the end तुम्हारी state और भी बुरी होती जाएगी. अब मेरी state अच्छी नहीं है यार, मेरी state तो बुरी होती जा रही है और मैं और सोच रहा हूँ कि मेरी state अच्छी नहीं है, and then you get to the feedback loop from hell that Mark Manson talks about in the Subtle Art of Not Giving a Fuck. Similar concept, yeah. It's the same thing. What you have to do here is to just accept it and let it run its course. We call it congruence. That what you feel inside, you're not trying to resist that. You're being one with it. तो अंदर जो तुम्हारा violence battle चल रहा है ना दो लोगों के बीच में, एक बंदा बोल रहा है नहीं बैंचो हमें करना ही करना है, दूसरा बंदा बोल रहा है नहीं भाई फटी पड़ी है, डाउनवर्ड स्पाइरल चल रहा है, मेरे बस की नहीं है, हर एक सेट में और भी बुरा होता जा रहा है, कोई पॉइंट नहीं है. Just accept it, come to terms with both those voices and do not resist. And once you do this, you'll be fucking surprised to find out that the moment you reach that state
of complete acceptance and complete approval of this state, and you have no judgments or no labels against this thing that this is a good thing or this is a bad thing, that is when surprisingly you're gonna start coming out of the fucking spiral. And that's gonna be fucking amazing when you fucking experience it, and that's the only way you can get out of a downward spiral. So the key point here is that the more you resist, the more it's gonna persist, and it's gonna persist so bad कि वो और नीचे जाता रहेगा, and once you accept it and once you act from it, that's when you're gonna start coming out of it. Now, don't think you can trick this shit. this doesn't work. अगर तुम बोल रहे हो यार डाउनवर्ड स्पाइरल आ गया है, मुझे पता चल गया ये भैंचोदा डाउनवर्ड स्पाइरल है, और भाई ने वीडियो में बोला था कि डाउनवर्ड स्पाइरल आएगा, तो मैंने पहचान लिया डाउनवर्ड स्पाइरल है, तो अब इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं. बट डीप डाउन इनसाइड यू लाइक, ओ फक यार डाउनवर्ड स्पाइरल आ गया, क्या करूं यार, मेरे को दूर भागना है इससे, कब तक एक्सेप्ट करना पड़ेगा यार इसको, मेरे को बाहर निकालो इससे, आई एम डन विद इट. एक काम करता हूं, मैं सबको बता देता हूं यार मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया है. एंड आई हैड अ स्टूडेंट लाइक दिस ऑन बूट कैंप. ओके, मैं उसको बोल रहा हूं भाई एक्सेप्ट कर ले पहले तो कि ये जो हो रहा है, और वो बोलता था हाँ ब्रो कर लिया एक्सेप्ट, अब बताओ आगे क्या करना है. आई एम लाइक ब्रो नहीं होता इतनी आसानी से एक्सेप्टेंस की, बोल दिया एक्सेप्ट कर लिया. एक्सेप्टेंस मतलब ये नहीं कि बस एक्सेप्ट कर लिया. इट मींस दैट यू एक्सेप्ट इट एंड देन यू अप्रूव ऑफ इट, यू डोंट ट्राई टू रन अवे फ्रॉम इट. तो अगर सरफेस पे यू एक्ट लाइक समवन जो एक्सेप्ट कर रहा है चीजों को, बट डीप डाउन इनसाइड यू आर इन फकिंग टर्मोइल विद योरसेल्फ कि नहीं 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 पैंचो मुझे बाहर निकलना है इसके, रियलाइज दैट यू कैन नॉट फकिंग चीट द सिस्टम. यार कोई चीट कोड नहीं है इसका, ऐसे चीजें वर्क नहीं करती हैं. रिमेंबर दैट टाइम व्हेन यू हैड अ क्रश ऑन दैट गर्ल इन योर क्लास, और तुमने जाके उसको आस्क आउट भी करा, बट वो मान ही नहीं रही थी यार, एंड योर लाइफ वाज फकिंग मिजरेबल, यू वांटेड दैट गर्ल सो फकिंग बैड, एंड देन आफ्टर अ मंथ और टू व्हेन यू फाइनली गॉट ओवर दैट गर्ल जो तुम्हें टेक्स्ट बैक नहीं कर रही है, दैट इज द फकिंग टाइम जब उसका टेक्स्ट तुम्हारे पास आता है, एंड नाउ यू डोंट रियली वांट हर. एंड दैट इज द पॉइंट आई वांटेड टू मेक इन दिस वीडियो. आई होप you guys enjoyed the video, you guys loved it. Leave a like, leave a fucking comment below if you did, and if you're not subscribed yet guys, come on, just hit the subscribe button, spank it, smash it, demolish it. I'm gonna see you guys in the next video. This is Kshitij signing off. Bye. यार वो टाइम याद करो जब तुम्हारा ब्रेकअप हुआ था, ऐसे बोलता हूँ इसको, ठीक है. गाना गा के बोलूं रचित तब अटकाऊंगा नहीं. यार वो टाइम याद करो. नहीं भाई अटक नहीं रहा, गजब ही चल रहा है.